Okay, so good morning everybody and once again welcome back in today's class, day number 27. And yesterday we discussed about the CMDB, right? Today we are going to be create a CI, okay, and we will see a lot in that particular area. Check. If I say, let me come back here and say okay, I want to create a CI of the computer class. So as I say that there are a lot of classes available in ServiceNow. It totally depends on your customer need that in which class you want to create a data. So like this one, base item computers, and I can click on this. Okay. We're not going to create the CI for all the classes. What I'm going to be discussing is mainly now that in the CI, when we create a CI record, the asset will get created automatically. That's the number one part. And we will see if I make a change in the CI fields, how the changes will be happen in the asset. Example, the car which is standing in the parking is an asset. But when the same car move to the garage, it become a CI. But दोनों में difference तो कुछ नहीं है. If the car standing in the parking is red color, still the same is in the garage as well, red color. Owner is Mr. XYZ, either standing in the parking or in the garage. But there are few fields which are different. Okay, so now what we'll do, we'll create a new CI here. Okay, so this is a table details or the table fields or attributes or the dictionary entries of a computer table. Okay. LNG, what I can say. This is my CI name. Okay. Company is which company it belongs. It's not the manufacturer one. Company like I'm working in a company where I'm working in a child company. So this is for that differentiation. Asset tag. What tag number you want on your asset? Because it is going to be create the asset automatically. I want LNGP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Any serial number you have of this one? Yes. LNGP 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Who's the manufacturer of this asset? Now you can see. I said SR. What is the model? Apple iMac 2.7, 27 inches. Okay. Now, yesterday Harshali put a question that, sir, do we look at asset for every CI? No. Out of the box service now, create the asset automatically only for the hardware type assets, not for everything. Okay. We will see that how from where this code is be running, where it is be identifying that I have to create the asset or not. Okay, then your computer may have OS domain, operating system, OS version, DNS name, disk space, description, anything you want to put, you can put it. The main intention for me is to be show this thing. So now we'll create let's submit this. And now I'll come back here and open my CI. When we submit it, it will take some time in the background and it will create the asset record for me automatically. Yes. So
For a hardware type CI, the asset record will get created automatically. It may take some time in the cases, but it will generate the asset here. Let me do one thing. Let me open the computer class in a separate this thing and show you the example. And let me add asset. Okay. And okay. So now you can see this. For this CI, the asset get created automatically. It is a combination of asset tag and model ID. In दोनों का मिला के it create a asset. Let's see, is it created here? नहीं, it take time. ठीक है, तो इसका और इसका combination रहेगा assets में. It takes some time. Sometimes it take a day for me as well in the PDI. ठीक है, so we'll come back here now. Let's say मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ to identify. P के बजाय LNGP. ठीक है, and let save this. ठीक, that is the number one part we have to be see. So now you can see my asset get created. ठीक है, इसमें भी टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इसको बंद लगना दो. We can leave that. Now I open this asset in the separate table, separate this thing window. ठीक. The second point which I said that there are few fields common in CI and the asset. That's for sure. Like name, color, assigned to, managed by. These are the common. Okay. So what ServiceNow say that if I make a change in a CI, will it get changed in asset? यहाँ पर भी. अब देखो main difference क्या है? As I say yesterday, that asset must have a financial bindings. तो यहाँ पर इसका financial details आता है यहाँ पे. कि आपने परचेज किया, किस इनवॉइस में परचेज किया, कितना कॉस्ट पड़ा उसका आपको, उसका डिस्पोजल कैसे होगा, कब होगा, उसका डेप्रिसिएशन कैसे है, 5 years का इसका लाइफ है और 5 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी और डेप्रिसिएशन इतना हो जाएगा. देन डू यू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फ्रॉम whom you buy, एनी एंटाइटलमेंट हु कैन यूज दिस. ठीक है, सो मेनली सीआई और एसेट में ये डिफरेंस है, 1, 2 और 3, ये 3 टैब्स विल बी डिफरेंट, क्योंकि सीआई में ऐसा कुछ नहीं होता. स्क्रॉल डाउन एंड कम बैक हियर. देखो इसमें कुछ नहीं है ऐसा. इन द सीआई वी हैव ऑल द इंफ्रा पार्ट, इसका आईपी क्या है, इसका फाइल सिस्टम क्या है, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या है, इसका रनिंग प्रोसेस क्या है, वो सब यहाँ पर रहता है. Did we get anything here? नहीं, ठीक है, छोड़ो. ठीक है, so now the point is that how this thing gets synced. Let's say I'm changing the assign to here and I'm putting LN and save. ठीक, now I'll go to asset. See, it gets changed. Now let me change here, managed by Aaron Albert. Save. Come back here. Do we have managed by here? नहीं है. Let me bring that. Form layout. ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस एक चेंज किया वहां चेंज हो गया. It has a complete story in the background. I'm just showing you one example, then we'll discuss this. Managed by group, managed by. Let me add this too. ठीक है, देखो आ गया. Albert. Now the question comes, Atul, from where these things getting changed? As I say, it's now
there must be some configuration, right? ऐसा तो नहीं है कि I just click this and it's working fine. So now we have two questions. Number one, how this asset will get generated, and number two, how this fields are getting work. ठीक है? To understand this part, we have to go to some business rule. And let me come back here. ठीक, and open business rules. And search यहाँ पर asset. ठीक है, let me see what is the business rule name. Add query, update, check asset and CI. Child नहीं, ये भी नहीं है. Copy, create asset and model change. रुको ले. और देखिए क्या है, इंसर्ट अपडेट एसेट प्रॉपर्टी, ये भी नहीं है. एसेट एक्सपेंडिचर, सिंक सीआई एंड एसेट, ये भी नहीं है. ये देख तो ये सिंक फील्ड टू एसेट, सिंक एसेट ओटीआईपी, नोट दिस वन. एसेट कहाँ गया, स्क्रिप्ट इंक्लूड है क्या? एक तो ये क्रिएट एसेट ऑन मॉडल चेंज. व्हाट इट्स सेइंग, इफ आई एम गोइंग टू बी चेंज द मॉडल, ये वाला अगर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, देन माय एसेट आल्सो गेट चेंज. ठीक है, तो ये बिजनेस रूल इस पर काम कर रहा है. कहां गया? ठीक, एंड इट हैज अ कंप्लीट एडवांस यहां पर ये. ठीक, बट इसके लिए एक सिंक प्रॉपर्टी लगती है दोनों को सिंक करने के लिए. ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग द बिजनेस रूल जो इसको रन करता है पूरा. Create asset, हाँ, create asset on insert, this one. ये देखो, ये बिजनेस रूल है. What it's saying, as soon as, और ये बिजनेस रूल, this we are going to discuss this business rule in the upcoming days. ठीक है, this logic run on the CMDB table. ठीक है, if you see here, here, and from there it pick up the things and create an asset. ठीक, when to run, before, and what to do. Let's scroll down here. ये इतना सही काम कर रहा है और कुछ नहीं है. But if you see these things, ये asset and CI, asset and CI, these are the different classes which has an actual code include. ठीक है, let me see if I can click on this plus or control, or it may has include some script include, मतलब background logic है सारा का सारा. But for us to be understand that how it's been working, when we click on the save, it will go and call this particular CI, sorry, this what I can say, business rule, and in the business rule it go and check that what I have to do, what value I have to be pick up. Let me see a script include as well. Because I want to tell you this model category is important. Asset and CI. Let's see. कोड सिंक करने का कोड है. Not this one. Asset management, asset. नहीं. कुछ नहीं, ठीक है. No worries. So we can come here. So when we click on this save button, it go and call this particular business rule, and in this business rule we have a different classes which go and check that what I have to be do.
on the basis of your model category. Now I'll tell you this one. जो ये है model, इसके base पर it decide it's a hardware or what category it is, and then it will get an asset. So now if I go here, let me say server. ठीक है, it's a class for me, right? And let's say I click on the Java server and click on the new. देखो यहाँ पे नहीं है, asset नहीं है इसकी. Maybe it's just physical, sorry, virtual server only. So it is not getting any asset for this. Okay, so it depends on your model as well, and type of class, and then it get a asset for me. There's a number one part. Little technical hai, but when you start entering in this domain, you will learn automatically that how these things are working. Now the second part, which is another important thing, is that how these two are getting sync. ये और ये. I make a change here, it appear here. I make a change here, it appear here. Again, to do this part, we have a business rule on the place, but the key factor is this mapping. ये तीन टेबल का खेल है. The first table says asset and CA field mapping. In this table, we define that which field of asset is mapped with which field of CI. Let's say if you're changing something in your Aadhaar card and your Aadhaar card has been linked with your PAN card, then the changes will be reflected in the PAN card as well. So same thing is applicable here as well. So ServiceNow says these are 29 fields I am giving you. If anything you change in asset, it will get changed in the CI as well. But इसके अलावा 29 fields के अलावा नहीं है. If you want to do, you can create your own field. But अतुल ये तो ऐसा तो नहीं होगा. Yes, ऐसे नहीं होगा. Then there is another business will run in the background. Sync and SYNC. ध्यान से देखना यहाँ पर एक there is a one more business rule that is say sync asset and CI. Synchronization import नहीं अभी तो देखा था हमने कहाँ गया वो CI, because that is the key only now. Okay, that is the key only now. And sync. अरे यार कहाँ गया ये ना, मैं हर बार भूल जाता हूँ बिल्कुल. Let's see here. Sync original OT IP, not this. रुको इसको ना ऐसे ढूंढते हैं, asset and CI करके एक साथ. Let's see in the Google only. Business rule to sync the SCI field. Create asset business rule enable data foundation. Not this one I need. Yes, set work with asset and CI. Let's see what it's saying. ये रहा, right. Good. चलो good, एक अच्छी चीज मिली, दिखाते हैं इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, then we'll come to this one. CI and asset are logically mapped. ठीक है, in the asset we have three things. One is a state, second is a substate, and third is a field. But in CI we have a four: install status, hardware status, and field.
कैसे? लेट मी शो यू, क्योंकि ये ना पूरा फंड ऐसे पे काम करता है. कॉन्फ़िगर लेआउट, and you will 100% get confused with this. I can guarantee you. ठीक है, it says operational status. ठीक है, this and this. Then hardware status and sub status. इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, और इसने क्या कहा? बस, और फील्ड्स तो हमारे हैं. ठीक है, लेट्स कॉपी दिस 3. सब स्टेटस कहाँ गया? ये ना. ओह, ठीक है, इसको ऊपर चलता थोड़ा सा इजी टू रहेगा. चलो, सेम. नाउ when we say asset to CI, sorry, state, asset is my physical. CI can be physical, but basically CI is not physical. CI is something I can, CI is physical or can be a logical only. ठीक है. Now if I say my car is not working, what this mean? My car is not working. I'm talking from the CI perspective, sorry, asset perspective. ठीक है. If I take to the mechanic, यार ऑपरेशनल नहीं हो रही है, चल नहीं रही है. ठीक. Now let me show you something, then we'll discuss these 3 parts together. जो 3 थे ना मैपिंग वाले, ये दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं फिर हम. Now come here, देखो. This is the status of a CI, that is called operational status. CI काम कर रहा है, it's not working, repair in progress, standby, ready or retire. But one thing is common to be, one thing not common, one thing is to be understand here. Let's say I told, or I say my CI is a non-operational. Then what will be the state of my hardware or state of my asset? और let's say यार मेरे पास कार थी, मैंने बेच दी, रिटायर कर दिया इसको. If my CI is get retired, what happened to my asset? बताओ. Will I have an asset or not? यस या नो तो बोलो. सर एक बार फिर से रिपीट करना. ठीक है, चलो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से तुझे परचेज अ लैपटॉप. ठीक है. Nowadays it's not that much cheap, it's costly. 1 लाख 1.5 लाख से नीचे तो लैपटॉप भी नहीं आते आजकल. ठीक है. She purchased a laptop. She said, this is my laptop. Okay. This is an asset. Yes. CI. Yes. Rituja's husband says, Rituja, your laptop is working fine. Yes, it's all good. Going good. Very fine. Very fine. She used that laptop for 2, 3, 4, 5 years. Okay. And now it is getting old. Not Rituja laptop. Okay. And she said, नहीं बढ़िया नहीं है, let me sell out or retire it. That laptop she retired it. Now what should be the state of a asset? It is in retired state. Asset will be retired state. Yeah. Everybody okay with this? भाई हर्षल है, ठीक है. At a one place he is a son. At the same place he is a son-in-law as well. Right? But हर्षल की बिहेवियर में तो कोई चेंज नहीं है ना उससे. ये हर्षल की और चेंज इन हर्षल क्वालिटीज. No changes, right? If Harshal is going out of India, his parent says to his relative that he's traveling on site. The same line will told by his
parents-in-law, what I can say, mother-in-law, father-in-law specifically. No, our son-in-law is going to on-site. Same cheese, right? So this is important to be understand here, that the status of a CI is different than the status of a hardware. अब देखो हार्डवेयर में तो बहुत से स्टेटस है, इंस्टॉल, मेंटेनेंस, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ट्रांजिट, डिफेक्टिव, and these three, operational status, hardware status and sub status, has the direct relationship with this state and sub state. यहां क्योंकि एसेट का ऑपरेशनल स्टेटस नहीं होता, एसेट का सिर्फ स्टेट होता है. असली कहानी तो अभी शुरू होगी यहां पे, ठीक है. सो लेट कम बैक हियर. सो वी कैन सिंक दीज थिंग्स. वो कह रहा है एसेट्स का स्टेट वी कैन सिंक विद द सीआई का स्टेट जो मैंने बताया, बट हार्डवेयर स्टेटस जो है दैट कैन बी द सबस्टेट एज वेल ऑफ एसेट. मतलब कि ये वाला हार्डवेयर स्टेटस कहां गया, ये था. तो कोई यहां पे है क्या? हाँ, हार्डवेयर स्टेटस ये, सॉरी, ये था. दिस इज ऑल्सो सिंक विद समवेयर इन एसेट सबस्टेट. अभी कंफ्यूजन होगा. नाउ टू how this thing run together, that is important point for us to be understand. Okay, let me go ahead. सर इसका रियल लाइफ एग्जांपल कोई है क्या? जैसे वाई मतलब हार्डवेयर का स्टेट उसका स्टेट होगा, लेकिन सीआई का स्टेट भी हार्डवेयर के स्टेट पे डिपेंड रहेगा, करेक्ट? रहेगा, वेरी नाइस, रहेगा, बट होता नहीं है पूरा. द रीजन बीइंग these three fields are working. Okay, let me come back on this part. ठीक है, let me open this table now. Asset CI status mapping, asset CI hardware status mapping. ठीक है, everybody. This table says, sorry, all and all. This table says that asset and CI install status mapping कि इसमें जो कंडीशंस हैं, इसमें जो चीज लिखी है वो सिर्फ इस पे काम करेगी, ऑपरेशनल स्टेटस पे. ठीक है. ओके, सीआई विल बी ऑपरेट ऑन ओनली ऑपरेशनल स्टेटस. हाँ, ओके, ठीक है. नाउ व्हाट इट सेज इफ आई चेंज माय स्टेट ऑफ द एसेट in transit and pending disposal, then my CI state must be in stock. और ये asset to CI configuration syncing हो रही है, अपोजिट नहीं हो रही, रिवर्स नहीं हो रही. ठीक है, लेट्स डू दिस. गो टू asset and change the state to in transit. In transit. Substate क्या है? सबस्टेट यहां पे पेंडिंग डिस्पोजल. पेंडिंग डिस्पोजल. ठीक है, एंड क्लिक ऑन द सेव. If I change this thing, then practically my configuration status should be get changed to the in stock. Operational status, क्योंकि ये उसकी बात हो रही है, स्टेटस की बात हो रही है. कम बैक हियर, कम CI. इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ऑपरेशनल स्टेटस को, जबकि चेंज तो ये हो गया, हार्डवेयर स्टेटस चेंज हो गया मेरा. राइट? क्यों भाई? हमने तो चेंज इसके अकॉर्डिंग किया, राइट? कि भाई इंस्टॉल स्टेटस के हिसाब से बताओ तो मुझे क्या होगा, राइट? यस सर. प्रैक्टिकल तो ये चेंज होना चाहिए यहाँ पे कुछ, लेकिन हुआ ये चेंज. ठीक है, क्यों? क्योंकि इफ यू गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एसेट सीआई हार्डवेयर स्टेटस मैपिंग, हार्डवेयर स्टेट मैपिंग, यहां से चीजों में फर्क पड़ जाता है. सो दीज टू टेबल्स, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, वर्क इन कंजंक्शन, आपस में मिलके काम करते हैं.
ठीक है, ये आपस में मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इफ आई एम चेंजिंग समथिंग ऑन दिस इट विल वर्क फॉर मी, नो, ऐसा नहीं है। सर ये स्टैंडर्ड है क्या मैपिंग? यस। इसलिए कंफ्यूजिंग है। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है। द रीजन बीइंग व्हाट सर्विस नाउ सेज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट CI, don't discuss anything about the hardware on the CI form. ठीक है, service now says that I am giving you these all fields in a one table, that's fine, but don't bring these fields on the CI table, otherwise you will get confused. जो आप हो गए अब, why you want to see the hardware status on the CI? उसके लिए तो मेरे पास ऐसा टेबल है, वहां जाके चेक करो, क्लियर है ना, यहाँ जाके चेक करो क्या स्टेटस है मेरे इसका। Now let's say if I change this in use, pending retirement, and save. Installed आ गया, in use आ गया अपने आप। Let's say if I change something here, repair in progress, और मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ, out of stock, awaiting update। सर एक मिनट, वो फर्स्ट फॉर्म पे जाना प्लीज। एक मिनट, फर्स्ट फॉर्म मतलब कौन सा? जो आपने अभी चेंज किया ना, उसका सब स्टेटस और स्टेटस। ये वाला? नहीं ये नहीं, जो पहले किया वो वाला। ये वाला इंस्टॉल, हाँ ये इंस्टॉल और सब स्टेटस पेंडिंग रिटायर्ड, ये कौन से सिचुएशन में होगा पर ये सब दोनों कॉम्बिनेशन? नहीं हो सकता ना, मेरे पास लैपटॉप है बट वो बस रिटायर होने वाला है, हो सकता है सब स्टेटस यूज में तो चल रहा है ना अभी। ओके। भाई एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कभी ना कभी तो रिटायर होंगे ना वो। ये फिर ये इसका फ्यूचर स्टेटस क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब फ्यूचर में क्या स्टेटस रहेगा वो कैसे दे कैन टेल? मतलब देखो, इसका वो कुछ रिन्यू भी हो सकता टाइमलाइन है। बोला है, क्या है? कुछ टाइम लिमिट बोला है कि नहीं, ये एसेट इतने दिनों के बाद मतलब वो रिटायर ना, होगा। you can put in the disposal, end of life यहाँ देख सकते हो आप इसका, कब का इसका end of life। we can create that end of life support and other things will be there, कि 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल चल सकता है। तभी फिर उसका पेंडिंग रिटायरमेंट भी चेंज होगा इफ एंड ऑफ लाइफ चेंज होगा तो? एंड ऑफ लाइफ तो खत्म हो गया ना, उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, So let's say we are in this group, in this batch, right? Now this batch is in the use, agree? In running status, हाँ है ना, रनिंग स्टेटस में है ना बैच तो, राइट? सब स्टेटस क्या है इसका? पेंडिंग रिटायर, गोइंग टू बी क्लोज। अगर आज if someone call me today and say Atul, I want to get trained in the admin part, can you add me in a batch? No, sorry, it's in the running status and going to be close in 2 weeks. ये मेरा सब स्टेटस हो जाएगा। So now these mappings work on these tables. Let's say if I'm going to change this one, in stock, pending, and in disposition, ये क्या है? बोथ है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं और यहां पे देखता हूं डिस्पोजिशन है क्या, ये, ठीक है, एंड सेव, ठीक, तो ये इन स्टॉक और अवेलेबल। अरे ये कैसे हो गया? हमने तो ये किया था, कहां गया ये? इट शुड बी इन स्टॉक एंड पेंडिंग डिस्पोजल, ये क्यों हो गया यहाँ पर? सी, इन स्टॉक और अवेलेबल क्या, पेंडिंग डिस्पोजल जाना चाहिए था, शुड बी दिस वन, राइट? बट इट गो बैक हेयर एंड यहाँ पे इसने चेक किया और उसके हिसाब से इसने चेंज किया अपना एग्जैक्ट स्टेटस। ये प्रॉब्लम होती है। मतलब when we change status on CI it looks into asset CI mapping, और जब हम asset पे करते हैं तब वो CI को it check, okay, I'll try to give example, ठीक है? Now I keep 2
jugs of items. एक में चाय है, मीठी वाली चाय, और एक में है फीकी चाय. ठीक है, अब दोनों क्या है? चाय है, और मैं हूं पीने के लिए रेडी कि आई वांट टू गेट अ कप ऑफ टी. नाउ आई टोल्ड टू समवन, हे कैन यू गेट मी अ विदाउट शुगर टी. ले आया. But Atul, you are not diabetic. You can take it sugar. Can you bring the sugar as well for me? और वो क्या, उसने क्या किया? He go to that place and get me sugar tea now. इसको मिक्स कर दो, आपका काम चल जाएगा. So practically what happened? What ServiceNow says that these two tables, hardware state and install status, work in hand. But the problem is that now I change something, it is not working properly for me. Right? मेरा तो आंसर नहीं आया यहाँ पे. एग्री? भाई मेरे हिसाब से तो एसेट का स्टेटस ये होना चाहिए था, डिस्पोजल वाला, पेंडिंग डिस्पोजल, आर अवेलेबल. इट मीन्स माई रूल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. देन ServiceNow says you are doing the wrong thing. You are doing the wrong thing. यहां पर तीन चीजें हैं, 1, 2 and this 3. इन तीनों में से एक टाइम पर एक ही चीज रन होगी. अब अगर if you see this thing, if you see these values and if you see these values are same almost. Different. ये क्या है? लुकअप टेबल तो हमारी इतना सा तो कुछ भी नहीं है ये. But this lookup table is working on some business rule, right? It's like a lookup table only, right? Which run on the business rule. So there is a KB article available. Asset CI, ये देखो, install status, and open this. Read this article today. Okay. नहीं ये नहीं है, रुको नहीं. It's a KB article, not this one. ये ना. हाँ, yes. Good. So what is KB saying? Install status of a hardware CI is map from the asset to CI, but not map the asset from CI to asset. मतलब कि इंस्टॉल स्टेटस फॉर द हार्डवेयर सीआई, मैं इसकी बात कर रहा हूं. ये इंस्टॉल स्टेटस है मेरा, राइट? इसमें कुछ और भी देखे, और आई एम मिसिंग समथिंग. Maybe I'm missing something. Come on, quick. Yeah, sorry, this one. यहाँ से देखो, अब एक और चीज आ गई है. It also has impact. Let's say in stock and save. मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हुआ. और लेट्स से इफ आई पुट इन स्टॉक बजाय रिटायर्ड एंड सेव, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंस्टॉल स्टेटस से. तो यहां पर एक चीज और व्हाट वी इंट्रोड्यूस, वन इज द ऑपरेशनल स्टेटस व्हिच इज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीआई. इंस्टॉल स्टेटस, आई हैव अ कार बट दैट कार इज स्टैंडिंग इन द पार्किंग नाउ. ये उसका वहां का स्टेटस है, काम कर रही है नहीं कर रही है, डजंट मैटर फॉर मी नाउ. दैट आई कैन गेट इट फ्रॉम ऑपरेशनल स्टेटस. इंस्टॉल क्या है यार? ड्राइविंग ही नहीं आती गर्मी किसी को, खड़ी है गाड़ी तो होता ना कई बार.
लैपटॉप ले लिया, किसी को आते चलाना, पड़ा हुआ घर में, खराब है ठीक है, मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा, वो तो यहां पर आएगा, है ना तुम्हारे पास? हाँ है। उसका स्टेटस क्या है? नाउ इट इज ए हार्डवेयर फॉर मी, उसका स्टेटस क्या है? यार वो तो डिफेक्टिव है, सब स्टेटस डिस्पोजेबल। अब देखो इससे कितना फर्क पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कह रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। दिस इज व्हाट दिस केबी सेज। ये कह रहे हैं इंस्टॉल स्टेटस फॉर ए हार्डवेयर CI, लेट्स से पेंडिंग इंस्टॉल, इज मैप फ्रॉम द एसेट टू CI। यहां पर तो मैप है वो, लेकिन नॉट मैप फ्रॉम CI टू एसेट, लेकिन यहां पर मैप होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा है, ये कह रहा है। अब क्या करूं मैं? इन टेबल आई कैन सी यस इट इज मैप फ्रॉम वन साइड, लेकिन अदर साइड इट इज नॉट वर्किंग इवन दो इट इज मैप एज वेल, और इवन नॉट मैप बट स्टिल नॉट वर्किंग एनीथिंग। गाड़ी है घर में, हाँ है, दैट इज माई इंस्टॉल स्टेटस। ऑपरेशन स्टेटस क्या वर्किंग में है? हाँ वर्किंग में है। हार्डवेयर स्टेटस क्या है? क्या टूट गई? हाउ इज पॉसिबल? यू सेड वर्किंग में है, तब टूट कैसे गई? देन हार्डवेयर शुड बी इन द वर्किंग कंडीशन ओनली, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। इन चारों को अगर आप एक साथ लेके आते हैं, 1 2 3, सॉरी 3 को, ठीक है। नाउ व्हाट सर्विस नाउ सेज, आई नो दैट दिस इज अ इशू, 100% agree on this part. It says that you cannot use these 4 things if I come on the crunch. ये देखो ये है asset to CI mapping, it work, asset to hardware it will work, CI to asset और हार्डवेयर टू एसेट, इन दोनों में से एक काम करेगा एक टाइम पे। नाउ यू हैव टू बी डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। Asset to CI is one thing, because ServiceNow say even though this is an asset but it is a hardware asset or software asset, तो उसका रिलेशनशिप है। इसकी वजह से तो ये आया ना, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकल गया मेरा, ये वाला हार्डवेयर स्टेटस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एसेट्स तो नहीं, बट ये लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट डिड नॉट हैव अ सर्वर्स, दे डिड नॉट मेक अ सर्वर, व्हाट दे बिल्ड, वो तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑल द थिंग्स, राइट? सो दिस थिंग वी कैन पिक अप फ्रॉम हियर कि एसेट टू हार्डवेयर का क्या स्टेटस रहेगा। माई एसेट इज माई कार, बट कार इज ए हार्डवेयर एज वेल। कार बाहर से खराब होगी, माई एसेट इज नॉट गुड बट द इंटरनल हार्डवेयर इज गुड, स्टेटस में फर्क पड़ता है। बट CI टू एसेट इसका रिवर्स, और हार्डवेयर टू एसेट, इन दोनों में से एक चीज एक टाइम पे काम करेगी। एंड दैट इज द रीजन इफ यू आर मेकिंग सम चेंजेस हियर, sometime it reflect here, sometime it did not reflect. Let me change it now. Let's say in maintenance, कुछ नहीं है मेंटेनेंस में, खाली सेम। अब देखो सी चेंज हो गए, इंस्टॉलेशन चेंज हो गया, हार्डवेयर स्टेटस चेंज हो गया, सब स्टेटस चेंज हो गया। अब बताओ मैंने एसेट से क्या किया? मैंने एसेट से CI पे किया, ये वाला। अब CI से एसेट और हार्डवेयर से एसेट में फर्क है, मतलब कि इफ आई चेंज समथिंग हियर इन द हार्डवेयर, कहां गया? अरे हाँ ये तो ढूंढ रहे थे हम, वेरी गुड, मिल गया स्क्रिप्टिंग गुड। चलो इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये यहां से फर्क पड़ जाता है, ये वाला। इफ यू वांट टू मेक अ चेंज दैट, नहीं मेरे फॉर माय कस्टमर दिस इज द प्रायोरिटी, नॉट दिस इज द प्रायोरिटी, देन यू हैव टू मेक अ चेंज इन दिस स्क्रिप्ट इंक्लूड, जो हम अभी ओपन करके बैठे थे, ये रहा एसेट एंड CI सिंक्रोनाइजर। In this it has been given everything. वो कह रहे हैं you have to go to the script include and make a change in this code. आपको प्रेसिडेंस देना पड़ेगा उसको,
By default, it is like this. CI and hardware status change. If you want to make a change, you have to go and change this one. कि install status को priority दो. And then it will, you have to make these changes and it will work fine for you. But again, only one thing will work at a given point of time, not everything. So इन दोनों में से एक होगा और ये दोनों तो काम कर रहे हैं मेरे. And if I come back in the script include, you can see कि how syncing code between asset and CI records. Either you're doing the field mapping syncing, either doing the install status mapping syncing, either doing the hardware status mapping syncing. This decide everything for you. और बहुत बड़ा कोड है ये, देखो देखो मॉडल आईडी CMDB मॉडल कैटेगरी, यहां से भी चेक करते हैं कि कौन सी मॉडल कैटेगरी है. So, a lot of things are there. Create asset, bypass CI. Create asset, bypass this thing. कहीं भी मुझे नहीं बनानी पड़ती, मुझे एसेट नहीं बनानी है, CI बनी है बस काफी है. ठीक. So this code will help you to understand. बहुत बड़ा कोड है, even I don't have much idea about this thing. So now you can see like this. ठीक. By this way, they both get, the threes get sync: field, install status, and the your hardware status. I know it is confusing, but we will learn this thing by the time. ये कोई नहीं पूछता है. Nobody asks that how these are syncing together. But as a consultant, we should know that how these three are connected with each other. सर इसका मैनुअल, मतलब हम मैनुअल चेंजेस ही करते हैं इस पे, या और भी कुछ यूज है ये स्टेटस का? मेनली मैनुअल चेंजेस करते हैं ना. देखो यार, आप प्रैक्टिकली सोचो. यू आर स्टेइंग इन अ हाउस फॉर 10 years नाउ. आपकी वाइफ ने कहा हर्षल यार, इट्स आवर सोफा इज गेटिंग ओल्ड नाउ. ठीक है. देन यू हैव टू बी थिंक कि यार ये तो एसेट है, इसको एक काम करते हैं, इसको सेल कर देते हैं और फिर नया ले लेंगे. ठीक. सो इफ समवन सेज, हे डू यू हैव अ सोफा, ओल्ड सोफा? हाँ मेरे पास है ना, मुझे बेचना है यार. अब देखो ऑपरेशनल है, हाँ अच्छा खासा यार, बढ़िया चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है. बेचना क्यों है? बस पुराना हो गया. सो नाउ यू कैन सी दैट योर थॉट्स आर गेटिंग चेंज ऑटोमेटिकली, राइट? या. तो वो काम यहां पर भी होता है. बट इन द सिस्टम वी हैव 3 things: ऑपरेशनल, हार्डवेयर और इंस्टॉल स्टेटस. कहां पड़ा है सोफा? यार तो स्टोर रूम में पड़ा हुआ है. दैट इज द इंस्टॉल स्टेटस. ऑपरेशनल, हाँ बढ़िया है, अच्छा मैंने कवर करके रखा हुआ है, दैट इज योर ऑपरेशनल स्टेटस. हार्डवेयर स्टेटस क्या है? ये उसका ना एक पाँव टूट गया था, ये उसका हार्डवेयर स्टेटस है. यार तुम कह रहे हो अच्छा कैसे है फिर? दैट इज द रीजन इट्स से दिस थिंग. ये वाला हार्डवेयर टू CI. एक तरह तो तुम कह रहे हो बहुत अच्छा है, ऑपरेशन स्टेटस वेरी गुड, वर्किंग में है, यस. और दूसरे ने तुमने बोला हार्डवेयर का, उसका इतना पैर टूट गया था, एसेट हार्डवेयर टूट गया उसका. भाई अगर ऐसा है तो इट शुड बी चेंज आल्सो, राइट? तो CI एसेट स्टेटस भी चेंज होना चाहिए अगर वो ऑपरेशन स्टेटस चेंज होना चाहिए उसका. So what service now say, don't bring all these 4 fields in a one place. एक मिनट देना, मैं आपको करता हूँ 10 मिनट में कॉल क्लास में. हेलो हेलो. मैं 10 मिनट में करता हूँ, क्लास में हूँ. ठीक है भाई. ठीक है जी. यस. तो ये वहां से कहानी होती है. सो रीड अबाउट दिस आर्टिकल वंस. ढूंढना और पढ़ना. Why I'm saying, because I spent approximately 2 months to understand this part कि क्यों नहीं काम कर रहा है ये.
And then finally I reach out to this knowledge base and understand everything that, okay, the reason is that I was trying to do these 4 things, but only one of these will work, not all. ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक सबको? Yes, sir. Sir, मतलब status doesn't deal with the jobs actually, correct ना? Jobs, what jobs? जो डेटा को लेके आते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ना? उसका क्यों फर्क पड़ेगा? देखो देखो, स्टेटस इज अ फिजिकल थिंग्स आई एम सेइंग. अब किसी ने पूछा हर्षल हाउ आर यू डूइंग, अच्छा हो यार, बट फ्रॉम द इंटरनल पार्ट, इंटरनल माइंडसेट, मेंटली हर्षल नो दैट ही इज नॉट वेल. He may be in depression, maybe he's not good, alone kind of things. तो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, that is the thing we are be seeing here, and that is a problem. The same example, you want to sell out the sofa. I ask you questions. Operational status. Let's come back here to be understand this. ठीक है, मैंने पूछा ऑपरेशनल स्टेटस, हर्षल ने कहा ऑपरेशनल है, चलो ठीक है. मैंने कहा इंस्टॉल स्टेटस, कहाँ पड़ा है? स्टॉक रूम में पड़ा है. स्टॉक है, ठीक है, चलो. मैंने कहा हार्डवेयर स्टेटस, डिफेक्टिव है या अनऑर्डर है या पेंडिंग रिपेयर है. चलो, अरे अगर पेंडिंग रिपेयर है तो ऑपरेशनल कैसे हो सकता है फिर वो? आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, राइट? करेक्ट. और कहाँ रखा हुआ? स्टॉक में रखा हुआ है. ये बोल दो चोरी हो गया. अरे चोरी हो गया तो ऑपरेशन कैसे है? बिकॉज यू डोंट हैव आइडिया कि ऑपरेशन चोरी होने के बाद आप इट्स स्टोलन, बट इट इज नाउ एंड इट्स पेंडिंग रिपेयर नाउ, ठीक है, तो चोरी हो गया. करेक्ट. राइट? So ServiceNow say if you bring everything together, you will get confused. So don't bring these 3 together. Only keep one, that is operational status, if you are talking about a CI. अगर एसेट के बारे में बात करनी है तो एसेट के टेबल पे जाके बात करो. यहां बताओ क्या है? What is install status? यार मिसिंग है. क्या हो गया मिसिंग में? लॉस, गुम हो गया. Now if I save this, let's say, and come back here, देखो चेंज हो गया. सब इवन तो ये भी चेंज हो गया. देखो अब तक तो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया. यस सर. एंड ये भी एब्सेंट हो गया. एब्सेंट हो गया, लॉस्ट. Why it's working? Because we are taking, we don't taking the precedence. हमने कहा, ये बताओ एसेट 2 वाला बता दो, हमें चल जाएगा काम. ठीक, अभी हमने अभी एसेट टू सीआई किया. एसेट टू सीआई किया, लेकिन एसेट टू सीआई करने के साथ साथ हमारा एसेट टू हार्डवेयर भी चेंज हो गया. देखो ना, तो हार्डवेयर हार्डवेयर भी चेंज हो गया. राइट? करेक्ट. हाँ, समझ में आ गया सर. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट दिस इज व्हाट इज. सो ये 3 चीजें हुई हमारी. एसेट टू सीआई हुआ, एसेट टू हार्डवेयर हुआ, और हार्डवेयर टू एसेट भी हुआ. या सीआई टू एसेट नहीं, हाँ सीआई टू एसेट भी हुआ ना. यहाँ पे इसका तो चेंज हुआ स्टेटस. ठीक है जी. क्लियर? सर आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था. गुड. व्हाई हार्डवेयर नहीं, सर्वर क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर क्लास. हाँ सर, अगर कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर अ सर्वर? मतलब इट हाउ वी कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट कॉन्फिगरिंग द सर्वर्स? क्रंच क्या है? क्रंच बताओ मुझे. क्रंच बोले तो समझ बताओ भाई. तो तुम कहानी सुना रहे हो सर, ये नहीं रहेगा तो कैसे होगा? in the research ना, we have to prove our thoughts with the other researchers point, कि उस रिसर्चर ने ऐसा बोला है इसलिए मैं भी ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स भी वैसे ही आ रहे हैं जैसे उसके रिजल्ट्स आए थे.
पॉइंट आपका सही है, बट ऑन विच बेसिस यू आर सेइंग कि सर अगर कंप्यूटर में सर्वर कैसे होंगे? बिकॉज what I think, my understanding says our laptop is nothing, it's a server only. It's managing everything for us. And the same concept service now also think, and the industry also says. अब मैंने कहा मेरे पास एक सर्वर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मैं अपने लैपटॉप को सर्वर बना देता हूँ. सर्वर क्या है कि जहां पर कोई चीज आएगी कुछ सर्व करेगा वो, राइट? वही है ना, उसमें आप स्टोर भी कर सकते हो. सर हमारा पर्सनल लैपटॉप कैसे सर्वर हो सकता है? हमने बनाया नहीं, बना सकते हैं. ओके, we can make it when we do the discovery. ठीक है, आप डिस्कवरी अपने सिस्टम से रन करते हो और चाहते हो कि मेरे ही सिस्टम रिटर्न करके लेके आए, ढूंढ के लेके आए. हाँ, उसको आप इंफ्रा बना दिया ना, आपने सर्वर बना दिया. बट वो स्पेसिफिक मेरी यूज के लिए हुआ ना सर. सर्वर इज व्हाट वी कैन, मतलब हम 1000 लोगों का यूज कर सकते हैं. नहीं, बट एटलीस्ट बना तो सर्वर ही ना. Like when I was in support project, we have a common laptop. ठीक है? And it was told to us, this laptop will never get shut down. अच्छा. It is like a server for us. Because all the production jobs are configured on this. So nobody will touch this laptop. Just make sure that battery is on and it's working properly. But nobody will shut down this laptop. क्योंकि उन्होंने सर्वर बना रखा था अपने लिए. अच्छा. If you want to log data, log in from your laptop, go to that particular laptop IP and bring the data in your laptop. That's the way. Okay, this is very interesting topic. If you want to learn a little bit more about CMDB, I recommend go to Now Learning and do the CMDB fundamental course. It's a micro certification. Do that. You will get more knowledge about this thing. Clear everybody, Rituja? Yes, a bit confusing. Confusing hai, I know. Confusing hai, and must be confusing as well. Because we can't say that we are able to understand CMDB in a one hour session. It's not possible. This is just a basic understandings. What is coming, how it's working, where it's going. At least that thing we should know. Clear? Yes. Yes. Now the last point in this part is called the relationship. Come back here. Now yesterday we give example, right? When a child take a birth and we start building relationship. जिसके मामा हैं, चाचा हैं, ताया जी हैं, and we sometimes say to kid as well, अरे तू तो मामा बन गया, या तू मामा है, तो चाचा है इसका, तो भाई है इसका, तो cousin है इसका, right? In the same manner, we have a CI relationship as well. जो हमने कल देखा, CI classes में देखा. But how we can build the relationship in our form, that is the important point to be understand now. If you scroll down, we have this thing, related items, and then click on this plus icon. This plus icon will take you a place where you can build the relationship. But if you see this tick box, this is coming from the CI class manager. वहां पर बताया था, मैंने कहा suggested relationship. ये वो है कि ये CI बाकी CIs के साथ किस रिलेशनशिप में आ सकता है. This CI can be related with other CI in what type of relationship? Friend, say girlfriend, say fiance, say wife. 4 suggested relationship है.
नहीं मुझे नहीं चाहिए सजेस्टेड, मुझे तो सारे चाहिए, मैं कुछ भी बनाऊं रिलेशनशिप, ठीक है हटा दो. It will show you all the relationship now. It can be wrong, it can be right. Up to you. Like I give you example yesterday, right? My that the lady to whom we call as a Didi. My mother also called them a Didi. I also call them a Didi. Call her, sorry, I call her Didi. How this possible? अतुल तो relationship ही गलत है. Either your mom says something, some different relationship, or you have a Didi relationship, that's still fine. But your complete family is saying the same relationship. It is wrong. Same thing is applicable here. Service now say use the relationship which I am suggesting you. That will be good. But if you want to go for anything else, up to you. Go ahead. I'm not stopping you. So now this CI can be related with the other CI in these relationships. Contain, depend, parent, host, child. ये देखो बहुत सारे relationships हैं. On, run, use, virtualize. देखो. Now what I will do? I'll do this thing. Depends on. As soon as I change this part, this filter gets changed. Let's take an example. Amisha give a birth to a child, to a kid. Okay. Now on the Amisha's side, Amisha's parents, they become Nana Nani. On her husband's side, parents become Dada Dadi. Okay. This is what our culture work. Okay. Now Amisha's mother has a sister as well, 2 sisters, elder sisters, मतलब कि अमीशा की मासी. Then what we say to the kid? ये तेरी छोटी नानी है, ये तेरी बड़ी नानी है. Same thing goes for the father side. ये तेरी छोटी दादी है, तेरी बड़ी दादी है, ये सबसे बड़ी दादी है, जो घर में सबसे बड़े होंगे. Right? Yes or no? Now, if Amisha's sister-in-law get married, and if their parents came, अब वो ना तो नानी में आते ना वो दादी में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है. So same thing goes here. It says if you want to make a relationship depends on, then these are the best classes you can pick up. Because suggested है, गलत नहीं बता रहा हूं मैं आपको. Service now say I'm not telling you the wrong thing. This is what the right thing. Let's say host. अब देखो अभी फिर चेंज हो गया. So it is up to you that what type of relationship you want to build and what is the best classes you can make it. We can change, हाँ we can change it. कर लो ना change, क्या फर्क पड़ता है? But is it a good practice to change? नहीं, क्योंकि वो suggested relationship में है. So now let's say I want to make a host. इसमें तो कोई है नहीं, ठीक है. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पेरेंट्स पे. ठीक है, ये I want to go this one, this, and click on the plus. अब इसमें क्या देखो, LNG is parent, local HD is a child with the relation contains and contained by, means LNG contains local HD as a child. नहीं तो कुछ और बताओ यार, और 2-3 रिलेशन देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ नहीं है, ये है. ठीक है, डिपेंड्स ऑन. ठीक, एंड प्लस. अब देखो इसमें वही है, दिस इज बिकमिंग पेरेंट. मुझे इसको चाइल्ड बना रखो. आई विल सी सम अदर रिलेशनशिप सो दैट इट बिकम अ चाइल्ड. इसका चेंज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फिर देखते हैं. ठीक है, I'm just putting randomly so that I want to be sure that how the child relationship work. देखो अब ये है. Now this BOW IBM host
LNG, or we can say LNG hosted on this particular relationship, on this particular CI. तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसे कौन याद रखेगा? नो प्रॉब्लम, कम हियर एंड सेव एंड एग्जिट. ओके, नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन हियर, ओहो एसेट पे आ गए क्या? CI, ठीक. नाउ कम बैक, नाउ यू कैन सी हियर रिलेशनशिप. अब यहाँ पे दो टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. बट अतुल ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है अभी भी. क्लिक ऑन दिस. दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी मैप. दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी मैप. These are the downstream relationship and these are upstream relationship. अब देखो इसमें डबल एरो है क्योंकि इसके दो रिलेशनशिप हैं. अब कहते हैं ना कि मासी जो होती है, मासी माँ जैसी होती है, बट शी इज नॉट मदर एक्चुअली, बट शी इज लाइक अ मदर. मेरी माँ से कहती थी मैं तो तेरी माँ जैसी हूं, बिकॉज शी लव यू इक्वली दैट द मदर. द ओनली थिंग दैट शी इज नॉट योर मदर बट शी इज इक्वली द मदर. जैसे बुआ होती हैं, मामा होते हैं, अरे तू तो भांजे तो अपने बच्चा, आ जा चल घूमते दोनों, घुमा के लाता हूं तुझे. चाचा भतीजा होते हैं, मामा भांजा होते हैं, मासी होती है. उनके रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं. They are not actually that, but they are equal to that particular thing. So why this two-way relationship? Because if you see, we have added this 2 times. ये देखो ये रहा, एक बार होस्ट पे भी डाला, एक बार डिपेंड में भी डाला, जबकि गलत रिलेशनशिप अभी है. होस्ट और डिपेंड कैसे हो सकता है? ठीक. This particular dependency view we use in the change management, in the problem management. Now if I say I want to do some changes on this particular CI, क्या impact होगा? If the change goes wrong in this CI, then everything will be shut down. May create a problem. This is what we need to be understand. So we can say, and this is what we ask to the customer. Tell me the relationship, how your CIs are related with each other. ये नहीं कुछ भी बना दिया. कुछ भी क्या होता है, घर पे गया, अरे बेटा तो अंकल को नमस्ते करो, ये आंटी को नमस्ते करो. तब क्यों नहीं हमने कहा कि दादाजी हैं, नाना जी है, नानी जी है, मासी है, वो है? बिकॉज अलग है, वो हमारे रिलेशनशिप में, वो वाला रिलेशनशिप हमें नहीं बनाना है यहाँ पे. सो सेम थिंग गोज हियर. इसको BCM भी कहते हैं, बिजनेस सर्विस मैप, और डिपेंडेंसी ग्राफ भी कहते हैं सर्विस नाउ वर्ल्ड में. ठीक. These relationships are important. Now you can go and do little bit here. How you want to see? You want to see flat or tree format like this. ये upstream, ये downstream. Up to you. Split or merge. I can split like this. Up to 3 level, 2 level, 5 level. I said I want to 5 level. Means maybe under this one more are there. And what type of relationship you want to see? I want to see all the relationship. Okay, let's say I say 1. अब देखो कम हो गया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 कर दिया. If I put 3, then all the relationship 1, 2 and 3, all this will show. This is what the CA relationship work here. सर वो ट्री डायग्राम पे जाना है क्या? किस पे? ट्री डायग्राम जो आपने बताया था अभी. डिपेंडेंसी व्यू यार. हाँ, ये डिपेंडेंसी व्यू. सर अगर मेरा समझो लास्ट वाला कोरल IBM जो है, लास्ट कंप्यूटर, हाँ, वो एक CI है जहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं. ओके, जिसलिए मैंने चेंज रिक्वेस्ट रेज किया हुआ. तो अब ऊपर वालों पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि एरो डाउनवर्ड में आ रहा है. अगर ये बंद हो गया तो क्या होगा? ये तो चल रहे हैं बाकी सारे. और जहाँ 2 वे वहां पे सारा ही बंद पड़ जाएगा.
बन पड़ सकता है, राइट? ये तो कुछ भी एग्जांपल नहीं है. लेट मी शो यू अ एग्जांपल फ्रॉम दिस वन. सर्विस नाउ एग्जांपल. हमने तो इतने में देखे कि पूरे स्क्रीन पे दिखते भी नहीं. देखो ये है, ये देखो इतने बड़े बड़े होते हैं रिलेशनशिप. ये देखो होते हैं, डेफिनेटली लोग बनाते हैं, कंपनीज बनाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी है. वी आर जस्ट डूइंग द प्रैक्टिस. तो हमने 3-4 बनाया और दिखा दिया, बट एक्चुअली में इतना होता है. दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट. ठीक है. या हमको रिलेशनशिप बनाना ही पड़ता है ना सर. वी कैन नॉट कीप इट इंडिपेंडेंट ना. अरे भाई, वी आर ह्यूमन बीइंग. रिलेशन नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, राइट? ये मेरे फ्रेंड है. हाउ यू विल सर्वाइव? स्टैंड अलोन सीआई तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता. हाउ यू विल नो दैट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट? If in a family, let's say you are staying with your parents, you, your wife, kids, and your parents. If by any chance your father is not well, will that only impact your mother? No, impact to you, your kids, your wife as well. पापा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी ढीले चल रहे हैं. So that you can evaluate the impact. So we have to make a relationship like this. ठीक है जी, clear already everybody? Doubt, question, clarification. Try to go through this video again. If you want to go more about this, I recommend go to my batch 2 video of CMDB. एक बार उसको भी give a thought on this as well. That is also a very depth knowledge we discuss on that particular part. Same concept आपको मिल जाएंगे वहां पर. Go and read about, listen about that as well. ठीक है. And last question, doubt, clarification. Okay, let me take attendance now. Stop recording.